What is self-control? As the name suggests, that your ability to control your impulses, to control your own self. Now, the first thing that needs to be controlled while controlling oneself is controlling of your thoughts. What you want to think is in your hands. But some people who do not have this self control, what they do is that they allow themselves to think wildly, or as I used to tell you, whimsically. So, the whimsical part of thinking is uncontrolled thinking. Uncontrolled thinking a, is a is something that erupts from the wishes and desires that we make in our hearts, and then we keep thinking about them, or we think so much about them that it becomes our habit, and it automatically keeps coming to our mind. ऐसे कभी होता है कि कोई दिल में एक ख्वाहिश हो तो वो बार बार याद आती है, यू कीप रिमेंबरिंग इट, वो जो थॉट है वो बार बार ख्याल में आती है, बार बार बंदे को याद आती है. नाउ दिस हैपन्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन देयर थॉट्स. नाउ थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कैसे हो सकता है? हाउ कैन वन डू दैट? थॉट कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन, अब तक जो मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की एबिलिटी है वो सबसे बड़ी एबिलिटी है. सबसे, इट इज द बेस, इट इज द की टू ओपनिंग ऑल द डोर्स ऑफ गुडनेस इन योर लाइफ, एंड दैट brings us to self control also. A concentrated mind gains that ability. Now, what does the concentrated mind get? A concentrated person, a person who has concentration in his thoughts, can read his own thoughts, which most of you cannot. And not just read his own thoughts, but he is able to qualify and quantify those thoughts. यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड बंदा होता है उसको यह भी याद रह जाता है कि उसको एक ख्याल कितनी बार आया, उसको यह भी याद रह जाता है कि यह ख्याल सबसे पहले कब आया था. अभी मैं आप लोगों में से ज्यादातर से यह पूछूं ना कि अगर आपको कोई जो भी ख्याल आता है तो क्या आप बता सकते हैं कि यह पहली दफा आपको यह ख्याल कब आया था? तो आपको याद ही नहीं होगा. मोस्ट ऑफ यू वोंट रिमेंबर इट. बट जो कॉन्सेंट्रेटेड लोग होते हैं, सो दिस मीन्स दैट अ पर्सन हु हैज कॉन्सेंट्रेशन हैज बेटर मेमोरी ऑल्सो. उसको याद भी ज्यादा रहता है. वो खुद याद करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ एक काम करता है, वो अपने अंदर एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पैदा करता है, विच गिव्स हिम अल्टीमेटली द कंट्रोल दैट इज डिजायर्ड इन हिज थॉट्स. नाउ what is desired, what is the protection desired as far as the self control of thoughts is concerned? There are four kinds of thoughts which a person who is concentrating avoids. There are four thoughts. Number one, useless thoughts. Then bad thoughts. Then disturbing thoughts. And last one, dirty thoughts. Now, these are four thoughts which are destructive for human mind and body. Useless thoughts. Now, useless thoughts, which are useless thoughts? These are those, you want to say something? These are those thoughts which you have within you, what you talk about most of the time. Gossip. This is useless. You talk about cell phones, you talk about cars, you talk about models, you talk about engines, you talk about, such kind of things. Why are they useless? They're of no use. You are just talking for the sake of talking. You are just talking to impress others that, oh you tenu ki pata Audi di, oh main tenu dasna Audi, और आता किस पे है? वेस्पे पे. गल्लां ऑडी दियां. राइट? सो दिस इज द ट्रबल कि जो यूजलेस थॉट्स में फिर इसके अंदर बुराई क्या है? इसके अंदर यही तो बुराई है.
ये फीमेल्स जो हैं, दे मे टॉक अबाउट फैशंस एंड ट्रेंड्स एंड सच थिंग्स. किस लिए? व्हाट फॉर? जस्ट टू बी इंक्लूसिव इन सोसाइटी. ये गॉसिप कल्चर जो है, ये बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द विश टू बी इंक्लूसिव इन अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. Obviously it breeds fascination, then it breeds desires, and that is why this uselessness remains useless. It only creates disturbance. So at the end of the day you will ask me कि सर फिर बंदा सोचे क्या? अगर ये useless thoughts, bad thoughts, disturbing thoughts and dirty thoughts अगर ये निकल जाएं इंसानों के ज़हनों से, तो पीछे रह क्या जाएगा? What will be left? How can one be that way? No, that is only achievable through self-control of your thoughts, which will be directed. The power to control will come through concentration. वरना कंट्रोल नहीं हो सकता. आप एक दिन के लिए कर लेंगे, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कर लेंगे. You may be able to change yourself for a little while, but you will not be able to persevere. You will not be persistent. So you see all these character traits, ये जो जैसे perseverance भी आ गई, persistence भी आ गई एक ही बात में, ये hallmarks of higher level of human beings हैं. ये जो लोग ऊपर के लेवल के होते हैं ना, जिनको हम elites कह सकते हैं. मैं ये पैसों की पाकिस्तानी elite की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं पैसों की निस्बत में इसको नहीं तोल रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं कि वो लोग जो पैसे हैं या नहीं है, दे आर बेटर देन दी अदर्स. वो दूसरों से बेहतर होते हैं इन एनी केस. इसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता. बड़े बड़े पैसों वाले उनके पास आते हैं चाहे उनके पास पैसे ना हो. उनका विजडम, उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इवन द किंग्स एंड क्वींस दे कम एंड बाउ बिफोर देम. दे आर नॉट किंग्स एंड क्वींस themselves. Most of the times they are not kings and queens themselves, but they are kings and queen makers. They make them. They are a higher level of people. Now I'm not expecting that all of you would go to that level. Some of you can. I expect that. And the rest of you, if you practice these things in your character traits, if you bring these things, focus on them, work on them, you will definitely become better than the others. You may not become those kind of scholars, but you will definitely have more magnetic personalities than the others. Magnetism in a personality is reflected by the clarity of thoughts. ये याद रखिएगा. लोगों के अंदर जो कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है, वो दरअसल क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आती है. Have you not heard that what is love? Love is when a certain kind of chemical is released in your mind. So love is also a chemical reaction happening in your mind. So it is, and you feel it in your body also at times if you are madly in love. So you see, it means that our thoughts have the power to reflect in our bodies, and they reflect in our actions, and then they reflect in what we make or what we become. Now फजूल चीज़ें जो हैं, फजूल सोचें, जैसे मैंने बता दिया, यूजलेस थॉट्स, वो एग्जाम्पलीफाई मैंने आपको कर दिया है. Then there are bad thoughts. Now bad is bad, we all know that. बुरी बातें, बुरी चीज़ें, बुरी सोचें, बुराई किसी भी फॉर्म में, your ability to identify those thoughts in your mind, अगर ये आप में से किसी को मिल जाती है कि आप खुद अपने जहन में आने वाली थॉट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं कि यार ये फजूल सोच आ रही है, बुरी है, डिस्टर्बिंग है, डिप्रेसिव है, और या गंदी है. जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई ही नहीं करते
तो आपने फिर कंट्रोल क्या करना है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? डिप्रेसिव थॉट्स, या जो मैंने क्या कहा था, कौन सी है वो डिस्टर्बिंग थॉट्स, वो कौन सी होती है? नेगेटिविटी होती है, मायूसी होती है उसमें, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होता। सेल्फ पिटी इज इंक्लूडेड इन दैट। रिमोर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। रिमोर्स क्या होता है? एहसास से गुनाह, लेकिन रिमोर्स डज नॉट रिमेन नेगेटिव बिकॉज इट शुड गिव यू द पावर टू बी पॉजिटिव। लेकिन अगर वो सिर्फ रिमोर्स ही रह जाए और हो कुछ भी ना, अमल में कुछ भी ना है, खाली तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया की लाना तस्बीह हाथ फड़ के, यानी आप सोचते तो रहें, करें कुछ ना, तो फिर भी वो नेगेटिव बन जाती हैं चीजें। तो लिहाजा ये 4 किस्म की जो थॉट्स हैं, आप में से जो इससे बचने की कोशिश करेगा उसको एक नई किस्म की बैटल, वो मुजाहिद बन सकता है। यू नो, दैट्स अ काइंड ऑफ बैटल दैट यू हैव विद योर ओन सेल्फ। यू फाइट विद योर ओन सेल्फ। You do not allow yourself to destroy yourself. All right, it is a good question कि कैसे कंट्रोल करें। हर चीज, किसी भी चीज को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। That you have to identify these 4 thoughts in you. पहले तो अपने आप को अपना एक्सरे हर वक्त करना पड़ेगा, all the times. You have to find out कि मैं फजूल सोची जा रहा हूँ, मैं बुरा सोच रहा हूँ, मैं डिप्रेसिव सोच रहा हूँ, या मैं गंदा सोच रहा हूँ, गलीज सोच रहा हूँ। तो अपने आप को उन सोचों से रोकना, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ कंट्रोल दैट यू विल लर्न। सो इसके बाद थॉट्स के बाद बिहेवियर्स पे कंट्रोल आ जाता है, बिहेवियर्स के बाद हैबिट्स की बात आती है, हैबिचुअल हैबिट्स को कंट्रोल करना होता है, और फिर हैबिट्स के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाती है। सो दिस ऑल कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। आपकी पर्सनैलिटी नहीं बन सकती अगर आपने अपनी सोचों का मुहासबा नहीं करना, एहतसाब नहीं करना, अगर आपने सेल्फ ऑडिट नहीं करना, यू विल नेवर गेट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। अब ये जितनी बातें मुझे इसको अब्दुल्ला को या इसको या उसको इनको करनी पड़ती हैं, ये असूली तौर पर इनको अपनी खुद करनी चाहिए अपने आप से। मैं क्यों इनको ये कह रहा हूं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि ये सुन हुए हुए हैं, इनको वो एहसास नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सुन है। आप टीका लगा दें तो क्या होता है? सुन करने वाला टीका लगा दे तो क्या करे? एक बंदे को आप सुन करने वाला टीका लगा दें, उसके बाद उसको थप्पड़ मारे, उसको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सो जो लोग सुन हुए हुए हैं, पहले उन्होंने सुन चुत कढो, पहले उनकी सुननेस खत्म करें, दैट डम्बनेस, दैट थिंग, जिनको वो कंफर्ट जोन में वो चले गए हैं, और वो बेहिस, इसको बेहिसी कहते हैं बेसिकली। सुन होने से क्या होता है? बंदा बेहिस हो जाता है ना, उसको सेंस नहीं कर सकता, वो फील नहीं कर सकता। यानी दूसरा बंदा जो है, अगर आप उसको उस जगह पर चुटकी काटे तो वो चीख मारेगा जोर से, लेकिन आप सुन किए हुए बंदे को चुटकी छोड़ आप उसको वहां पर टक लगा दें, वो आगे से कहेगा क्या गुदगुदी क्यों कर रहे हो? यू नो, तो सुन किए हुए बंदे की जो सेंसिबिलिटी, जो सुन हुए हुए लोग होते हैं, उनकी सेंसिबिलिटीज ही और हो जाती हैं। उनको सही बात की बिल्कुल सेंस नहीं रहती, उनको ये अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाती है उनके अंदर से कि सही क्या है, बल्कि वो सही गलत के चक्कर से ही आजाद हो जाते हैं। वो कहते हैं बस मैं ढीठ। सो व्हाट इज इट? दिस इज द रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वंस ओन लाइफ। आपकी जिंदगी की तबाही की रेसिपी है ये, सीधा सीधा फार्मूला है। इन एक्शन रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन इन योर लाइफ। आप कुछ ना करें, आपकी जिंदगी तबाह है, सिंपल है। आपको कुछ करना पड़ना है। मूवमेंट इज लाइफ, स्टैग्नेशन इज डेथ।